Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is Unit 2 Chinese New Year. We shall revise exercise of Unit number 2. First of all, we shall revise glossary, association, connection, celebration, party or special event, customary, usual for somebody, gatherings, bringing together or coming together, lunar, relating to the moon, partake, take part or share in, recipient, receiver, reinvigorate, strengthen, symbolize, to represent, traits, characteristics. Next vocabulary है give meaning of the each word है used in the lesson. Gatherings, इज्तिमात, customary, रवाज, thoroughly, मुकम्मल तौर पर, common place, आम रवाज, partake, शिरकत करना, reinvigorate, तकवीयत. Form a noun from given words and use the noun in sentences. Example है celebrate, celebration. इस तरह gather, gathering. Symbolic, symbol. Prosper, prosperity. Decorate, decoration. Encourage, encouragement. Next इसका है analysis of pattern of text organization. Choose the correct option. Chinese New Year falls somewhere between January 21st and February 20th. Paragraph 1 gives specific details of Chinese New Year. It is customary for Chinese families to thoroughly clean their houses before the first day of the new year. Hanging up signs and posters on doors and windows means luck and happiness. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. Next, a collective noun. Fill in the blanks with correct collective nouns. It is typical for Chinese family to make 8 or 9 dishes for the New Year Eve dinner. The audience applauded heartily at the end of the concert. The class has just had a physics lesson. The gang of robbers was arrested by the police. A crowd of people gathered at the accident site. The committee took many important decisions at its monthly meeting. The crew of Pakistan Air Force looked smart in their uniform. Next है use of must and must not. Strong obligation के लिए must. All cleaning must be finished before the new year. और must strong prohibition के लिए must not. Mother, you must not play with matches. वालदा कहते कि आपको मैचेस नहीं खेलने चाहिए. Next, fill in the blanks with must or must not. She must not eat so much sugar. Students must pass an entrance examination to study at this school. You must not watch so much television. He must take some audience medicine for that cough. Visitors must not smoke. Next, present indefinite and present continuous tense. Make the present indefinite or present continuous sentences. You do not like chocolate. Shahida is not studying at the moment. They do not eat rice every day. You are not working now. It rains a lot here. I am going on holiday tomorrow. I am going on holiday tomorrow. Use of hyphen. Hyphen are used to divide word at the end of a line when the word cannot fit on the remainder of the line. There are 6 rules to follow. हाइफन्स जब हम वर्ड को लाइन के ऊपर पुट करते हैं तो वहाँ पर वर्ड फिट नहीं आता, तो उसके स्पेलिंग को तोड़ना पड़ता है. तो कुछ हम लोग इसके रूल्स पढ़ते हैं जो वर्ड को कैसे तोड़ा जाता है और किस तरह इसको लिखा जाता है. Divide the word between syllables. It means that
वन सिलेबल वर्ड्स आर नेवर डिवाइडेड। एक सिलेबल वाला वर्ड डिवाइड नहीं किया जा सकता, सिलेबल में वर्ड को डिवाइड करके लगाया जाता है। द हाइफन गोज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, हाइफन पहली लाइन के एंड पर लगाया जाता है। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस मेक नेचुरल डिवीजन, जो प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस होते हैं उससे ये डिवीजन आसानी से हो जाती है। डू नॉट डिवाइड प्रॉपर नाउन्स और एडजेक्टिव, प्रॉपर और एडजेक्टिव में हाइफन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। There should be at least 2 letters plus the hyphen on the first line and 3 letters on the second, यानी कि पहली लाइन पर 3 कम से कम स्पेलिंग होने चाहिए, फिर आप हाइफन लगाएंगे। डिवाइड हाइफिनेटेड वर्ड यूजिंग दी हाइफन ऑलरेडी इन दी वर्ड, जिन अल्फाज के अंदर पहले ही हाइफन लगा होता है तो उसी के ज़रिए हम हाइफन को चेंज कर लेते हैं, नया हाइफन इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। द मार्क पैरेलल लाइन लगा के ऊपर जो कॉमा वाला लगाया जाता है ये प्राइमरी स्ट्रेस की अलामत है, और जो पैरेलल लाइन के नीचे वाली साइड पे कॉमा लगाया जाता है ये सेकेंडरी स्ट्रेस की अलामत है।